Hey champions, what's up with you? Thank you so much for running back into my channel, that is #Vinay's Vision, and I'm your personal auxiliary Vinaypanekar. In this video, we are going to have a rapid revision on all the objective questions that may be asked to you in one or the other form in objectives, or they may also ask you the same questions in the question answer format for 2 or 3 marks. Make sure that you just put up your full focus into this video and also write down and jot down the main points that you find out is worth noting. Alright, the very first question: if the earth shrinks to half of its radius, its mass remains the same. The weight of an object on the earth will become dash times. तो यहाँ पर आंसर है 4 times. क्या आ जाएगा आंसर? 4 times. Alright. The acceleration due to gravity does not depend on the dash of the body. Mass of the body. Yes or no? What is the answer? Mass. M-A-S-S. Yes or no? Does not depend. Does not depend. Depends on what, by the way, then? Depends on weight. The weight of the body is dash at the poles. Is maximum at the poles. Yes or no? Then, according to Kepler's second law, the line joining the planet and the sun sweeps equal area. Sweeps equal area. The value of the acceleration due to gravity as we move from the equator to pole is? The value of acceleration due to gravity as we move from equator to pole decreases or increases? Decreases. Yes or no? We are not sure of this answer. The value of acceleration due to gravity increases. Increases. What is the answer? Increases. It's not. It doesn't decrease, it increase. As we go above the Earth's surface, the value of G. Choose the correct alternatives and write as perfect answer. As we go above the Earth's surface, the value of G decreases. Yes or no? Gravity कम होती है ना, जैसे अपन ऊपर जाते हैं, इसके लिए स्पेस में ग्रेविटी रहती है? No, decreases. How much will a person with 72 Newton weigh on the Earth weighs on the moon? Yes or no? यहाँ पर आंसर आएगा 12 Newton. Next, the escape velocity of a body from the Earth's surface, V, is how much? The escape velocity. Escape velocity of a body is? There are 4 options being given. The answer will be root of 2 gm upon r. Root of 2 gm upon r. Alright, root of 2 gm upon r. Yes or no? I hope you have noted down the main points. The SI unit of the universal constant of gravitation is? What is the SI unit? Yes, exactly. Nm square per kg square. Nm square per kg square. यहाँ पे dot will come. Understood? N multiplied by m square per kg square. Yes or no? Then true or false? The mass of a body is the amount of matter present in it. True or false? True. Very true. Yes or no? If the separation between 2 particles is double the gravitational force between the particles become half of the initial force. Yes? The answer will be what? False. The value of G decreases with depth below the Earth's surface. क्या value of G decrease होगा? होगा कि नहीं होगा? जब आप अर्थ के नीचे जाते रहोगे, the value of G at the center of the earth will become what? 0. तो यहाँ पर आपको क्या लगता है? value of G decrease होगा डेप्थ पे जाते जाते? True or false? अर्थ के गहराई में जाओगे आप, जस्ट इमेजिन करो आप एक खड्डे में गिर रहे हो, क्या वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? Then G has maximum value at the equator. G has maximum value at the equator. True or false? False. Yes or no? Then after we have mass the column. Mass the column है escape velocity 2 gm. Where is the question? Yes, here it is.
इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला विल बी व्हाट, रूट ऑफ 2gm अपॉन r. यस और नो? आपको इसको ऐसा मैच नहीं करना है, 1 डाल के आंसर लिखना है बी. सेकेंड, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, gm upon r square. Yes or no? Then on the next page, state the SI unit and CGS unit of G. SI unit and CGS unit of G. What is the answer? SI unit of G is, the SI unit of G is Newton meter square upon kg square, and the CGS unit is CGS unit is dyne dot centimeter square upon g square. All right, I'm still a bit confused with this question. True, yes or no? Then yeah, that's all from the first chapter. Where is the second chapter note? The dash element belong to the 18th group. Exactly. Which element? Non-metal elements. Alright. Or you can say inert gas also na, in 18th group. Inert gases is the right answer. Inert gases. Yes. Then what do we have? According to Mendeleev periodic table, properties of elements are periodic function of their atomic masses. Important question. The number of electrons in the outermost shell of alkali metal is how much? 1 electron. In alkali metals में electron कितना है? 1 electron. In which block of the modern periodic table are the non-metals found? कौन से block में आपको non-metal मिलेंगे? P block. Yes or no? और यहाँ पर ये वाला question star कर लो. Inert gases elements belong to 18th group. You know ना what all gases are there? Helium, neon, argon, krypton, xenon. Yes, helium वाला फुग्गा तुम लोगों ने फुलाया है, उसका गैस मुंह के अंदर लिया है, आवाज चेंज होती है, कभी ट्राई किया है? क्या ही ट्राई किया तुम लोगों ने? क्या ट्राई किया? What are the types of matter? There are, yes or no, 3 types of matter. Solid. There are 3 types of matter. They are solid, SOLID, liquid and gases. इतना समझ में आया? What are the types of element? Types of element क्या है? Metals, non-metals, metalloids. Metals, non-metals, and third is metalloids. Metalloid spelling METAL, metal, LOIDS, loids, metalloids. What are the smallest particle in the matter called? Smallest particle, what will you call it as? Atoms. Atoms. The smallest particle of matter is called as what? Atoms. Understood? Then we have second page questions. I'm so sorry. Dash made group of 3 elements each having similar chemical properties are called as triads, Dauber, near. Yes or no? Dauber ने 3 का element का group बनाया था, उसको triads नाम दिया था. तो what is the name of the person? Dauber nears. Yes or no? Then after we have next question. Dash atom have the smallest size. Dash atom has the smallest size. So we have got helium as the answer. What is the answer? Helium. Helium He. What is the answer for helium? He. Alright. I'm so sorry, your Daubenier spelling went wrong. DOBEREINER. REINER. Alright. देखो, once again I'll tell you Daubenier spelling. DOBER. Dauber. EINER. EINER. बोलो वापस से. DOBER. Dauber. EINER. Dash is the most electronegative atom. Most electronegative atom is called fluorine. Fluorine. Answer is
F. Yes, then we have Dash was a professor in Petersburg University. Who was the answer? Mendeleev. Yes or no? Mendeleev. Mendeleev's full name is Mendelleev Dmitri, Dmitri. Yes or no? Dmitri Mendeleev, Dmitri Vegas, a famous DJ artist. Then we have the element and the modern periodic table are divided into dash blocks. How many blocks? 4 blocks. S block, P block, D block, F block. Alright, 4 blocks. S, P, D, F. One of you please show me where is the table for that. What thing do we call it as? Periodic table. Yes, show it. So मैं आपको बता दूं S, P, D, F block कहाँ से कहाँ तक रहते हैं. Which will make our work more easier. Next. Yes. S block is group 1 and 2. D block S के बाद में P, SPD पता है ना, कार्टून आता था पहला, कार्टून नहीं था, पावर रेंजर था. I'm sorry. S block has group 1 and 2. P block has group 13 to 18. D block है 3 to 12. F block है lanthanides and actinides. Yes or no? F block में क्या आएगा? Lanthanides and actinides. All right. ये क्लियर हो गया आपको? बोलो S block group 1 and 2. P block 13 to 18. और उसके बाद में D block 3 to 12. समझ में आया? And F block is lanthanides and actinides. Then that showed that atomic number of an element is the most fundamental property and not its atomic mass. यहाँ पे आंसर है हेनरी मोस्ली. हेनरी मोस्ली सेम. Henry Moseley showed that the atomic number of an element is the most fundamental property and not its atomic mass. Then we have state the electronic configuration of nitrogen and phosphorus. Nitrogen का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्योंकि नंबर है 7, तो आप लोगों को पता है 2,5. 2 डिफॉल्ट रहेगा इच. यस और नो? 2 बाय डिफॉल्ट रहेगा क्योंकि पहले ऑक्टेट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना. समझ में आया? फिर उसके बाद में क्या है? 5 है. यस और नो? क्योंकि नाइट्रोजन का नंबर क्या है? 7. और हर ऑक्टेट में कितने आ सकते हैं? फर्स्ट को छोड़ के 8. समझ में आ गया? फर्स्ट को छोड़ के कितना आएगा? बाकी ऑक्टेट में 8 8 8 करके एडजस्ट हो गए. जैसे कि सेकंड वाला है फॉस्फोरस. फॉस्फोरस का 15 है नंबर. क्या है? तो आपको पता है पहले में सिर्फ 2 ही आएंगे, फिर उसके बाद में 8 आएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. यस और नो? 2 और 8 10 हुआ, तो एक और बनाना पड़ेगा 15 करने के लिए. 1 2 3 4 5. समझ में आ गया? यन्न रंड मून नालंज. यस, मलयाली आती है मुझे. A big South Indian I am. Name the group containing highly reactive non-metals only. ऐसे कौन से ग्रुप है जिसमें हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स है? आपको पता है ना, जो एटम बॉम्ब्स में भरते हैं, वर्ल्ड वॉर में काम आ चुके हैं. ऐसे कौन सी चीजें हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन. Yes or no? Fluorine, chlorine, bromine and iodine is the answer. This was all that we have from second chapter. Yes or no? And इससे ज़्यादा objectives को आपको रेफर करना है तो आप चैंपियन बुक को रेफर कर सकते हो. चैंपियन बुक के अंदर we have made a good set of objectives which will help you gain good marks. तो make sure करना, अगर आपने चैंपियन बुक अब तक नहीं लिया है तो उसको प्लीज ले लीजिए because it's absolutely free. No. It is for 59 rupees on the platform. All right. Yeah. Write the molecular formula of oxides of the following elements by referring to the Mendeleev periodic table. Na is what? Yes. यहाँ पर क्या बोला गया क्वेश्चन में आपको पता है कि यहाँ पर एक अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है एलिमेंट्स का सिंबल. आपको क्या करने का है? उसके अंदर ऑक्साइड्स को इंक्लूड करना है. तो Na अपना हो जाएगा सोडियम, सोडियम ऑक्साइड. सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑक्साइड. सी कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड. Rb रुबिडियम ऑक्साइड. नेक्स्ट
Is the spelling right? R-U-B-I, yes, R-U-B-I-D-I-U-M, rubidium. Okay. P stands for phosphorus pentaoxide. Ba, barium oxide. Cl, chlorine monoxide. Sn, tin dioxide. इतना clear हो गया आपको? Yes, we are done with this thing. Chapter number 3, please. Thank you very much. The reaction of nail with copper sulfate solution is dash reaction. Chapter number 3 के objectives जो रहते हैं वो ज़्यादा confusing रहते हैं. क्योंकि confusing रहते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना है, reference और revision करने के टाइम पे आपको जल्दी जल्दी क्या करना पड़ेगा, आपको फटाफट उसको लिख के रखना है कोई भी चीज़ अगर आपको कोई डाउट आता है तो. ओके. The reaction of iron nail with copper sulfate is called which reaction? Displacement reaction. Yes or no? पता है ना, एक क्वेश्चन आता था पहले हम लोग को आया था ये. सुधा डिप द कॉपर कॉइन, उसने कॉपर कॉइन डाली. Yes or no? कॉपर कॉइन उसने डाली थी तो उसके ऊपर से पूरा वो जो टार्निश हो गया था ना, वो टार्निशनेस हट गया. Yes or no? मालूम तुम लोग को जंग पकड़ लेता है कभी कभी, कॉइन भी अपन गले गले में डाल के रखता है. तो गल्ला है तुम लोग के पास? मुझे चला के देखे ना. ऑलराइट. जब उसने उसके अंदर डाली तो क्या हो गया, वहां पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ. क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. The more reactive sulfate displaces copper from the solution. Yes, I remember that answer. The more reactive copper sulfate displaces the copper from the solution. समझ में आ गया? And I also remember the equation. CuSO4, Cu plus SO4 gives CuSO4 plus SO. I am not sure of it. All right, but you make sure that if you have got this equation of mine, if you have somewhere in your memory, अगर आपको याद है कि ऐसा कोई equation है तो please जाके उसको textbook में search करिए, because who knows कि कल वो आ सकता है एग्जाम में ये टाइम पे आपको. The reaction CuSO4 plus Zn gives ZnSO4 plus Cu is also a displacement reaction. Displacement spelling everybody, D-I-S-P-L-A-C-E-M-E-N-T. In a double displacement reaction, dash happens. Iron remains at rest, ions get liberated, ions are exchanged, ions are not created. तो इधर पे आंसर क्या है? Ions are exchanged. Ions are exchanged. Combustion of coal in air is a dash reaction. Combustion of coal in air is what? Combination reaction. Yes or no? The crystal of ferrous sulfates are dash in color. Are pale green in color. Are pale green in color. Next. Alright. Then we have identify the type of chemical reaction of carbon compound. C12 H22O11 in the presence of heat gives 12C plus 11H2O. What kind of reaction it is? Decomposition reaction. Which reaction? Decomposition. Alright, then what do we have over here is match the column in the following table. Reactants, products, type of chemical reaction. Alright, तो आपको पता है Fe plus S क्या है अपना? Combination. FeS combination. Yes or no? CuSO4 plus Zn, ZnSO4 plus Cu displacement. 2Cu plus O2, 2CuO oxidation. HCl plus NaOH, NaCl plus H2O neutralization reaction. Yes or no? थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया. I'm sorry. Understood? Next we have the product form in the thermal decomposition of sugar. What is the product form? Exactly. क्या form होएगा? Carbon. The catalyst used to accelerate the speed of decomposition of hydrogen peroxide. Answer is manganese dioxide. क्या है? Manganese dioxide. Manganese dioxide. The product formed in the oxidation of ethyl alcohol. Product जो form हो रहा है ऑक्सीडाइज करने पे किसको? एथाइल अल्कोहल को. तो क्या फॉर्म हो रहा है? एसिटिक एसिड. विच एसिड? एसिटिक एसिड.
Spelling of acetic. Yes. Types of chemical reaction आपको लिखना है कौन से टाइप के chemical reaction है. We know that we have combination, displacement का भाई, double displacement की बहन, ऐसा कोई है. Decomposition, बड़ी बहन नहीं है. Then salt वाला neutralization. Yes. Combination, displacement, double displacement, decomposition, neutralization. Then combination reaction. Combination reaction में you know ना Fe plus S gives FeS. All right. Combination reaction का definition: when two or more reactants combine in a reaction to form a single product. To form a single two or more reactants. कंबाइन होते हैं. क्या होता है? क्या बनाने के लिए? सिंगल. उसको आप क्या बोलोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. विच रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन का आपको पता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच two or more products are formed from a single reactant is called decomposition reaction. Yes. Two or more products, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं. yes or no? from single reactant उसको क्या बोलेंगे आप? decomposition reaction. alright. दो टाइप के decomposition reaction है, एक थर्मल है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक है. थर्मल का एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू राइट ओवर हियर. CaCO3 in the presence of heat gives CaO plus CO2. समझ में आ गया यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेस होता है, तो अपन यहाँ पर वो CuSO4 वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं ना. तो यहाँ पर एग्जाम्पल के पहले हम लोग को डेफिनेशन क्या है इसका पहले देखना पड़ेगा. द रिएक्शन इन विच the place of ion of a less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of its own ions is called displacement reaction. The reaction in which less reactive element displaces the ion of more reactive is called what? Displacement reaction. Zn solid plus CuSO4 will give ZnSO4 plus Cu. Yes or no? Double displacement reaction. The reaction, आपको इसका मैं मीनिंग बता देता हूँ. The reaction in which the ion in the reactants are exchanged to form a precipitate. Ions in the reactants are exchanged. Ion क्या हो रहे हैं? Exchange हो रहे हैं. एक क्या बनने के लिए? Precipitate बनने के लिए. Ions in the reactants are exchanged to form a product. It is called what? Double displacement reaction. To form a precipitate. I'm sorry. What is the example for it? AgNO3. Ag plus NaCl gives AgCl plus NaNO3. Yes? AgCl plus NaNO3. Silver nitrate plus sodium chloride gives silver chloride plus sodium nitrate. Yes or no? Solution of sodium chloride and silver nitrate reacts with each other, forming a precipitate of silver chloride and solution of sodium nitrate. Then यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है? आगे वाला रिएक्शन एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक का मतलब ही आपको नाम से ही पता चला होगा. एंडो मतलब आंदो. हीट इज अब्सॉर्ब्ड. हीट इज द रिएक्शन इन विच हीट इज आंदो. मतलब क्या होता है? एब्सॉर्ब्ड. तो उसको आप क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक.
हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज, इसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। कुकिंग ऑफ फूड, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। कुकिंग ऑफ फूड, फूड ऐसे ही बन जाएगा अपने आप बिना हीट के, एंडोथर्मिक रहेगा ना? यस और नो? बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? फटाफट बताओ। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल जल रही है, एंडोथर्मिक। समझ में आया क्या नहीं आया? कौन सा है रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैंडल इज गेटिंग बर्न्ड, राइट? यस। Then explain the following reaction giving the balanced chemical equation. Magnesium strip is burnt in air. Magnesium strip Mg is burnt in air. Yes or no? तो हम लोग को मिल जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिल जाएगा? 2 Mg plus O2 gives 2 MgO. 2 Mg क्या मिल जाएगा हम लोग को? मैग्नीशियम ऑक्साइड। Next, calcium oxide is mixed with water. What is mixed with water? Calcium. When calcium oxide, stated lime, is mixed with water, calcium hydroxide is formed. Evaluation of large amount of heat. क्या बनता है? Calcium hydroxide. Calcium hydroxide. अब बहुत ज्यादा हीट क्या हो रही है? जा रही है, इवॉल्व हो रही है। इवॉल्व हो रही है मतलब एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। Yes or no? Then we have next question. Sugar is heated. Cane sugar is heated भी आ सकता है. When cane sugar is heated, it decomposes. It decomposes to form which color carbon? शक्कर को जलाएगा तो कौन सा कलर बनेगा? Black carbon. C12, H22, O11 in the presence of heat gives 12C plus 11H2O. Alright. Limestone in the presence of heat. Write A and B, form the following table and complete the table. Write the chemical equation. Limestone अगर heat देता है तो दो चीज बनती है। एक तो बनेगी आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaO. Alright. ये क्या बनेगा आपका? CaO. Second is what we are researching on. What is the second one? Till that time, let me ask you a random question from this chapter, chapter number 3. What is the spelling of rancidity, by the way? R-A-N-C-I-D-I-T-Y. Rancidity का मतलब पता है ना क्या होता है तुम लोग को? When we use old leftover cooking oil for making what? Foodstuff, it is found to have foul odor called rancidity. अगर कोई खाने में आप तेल वो यूज कर रहे हो जो आपने ऑलरेडी पहले चिकन बनाया था उसमें, या उसमें पापड़ तले थे या कोई कुछ किया था उसमें, वही वाले को आप वापस से यूज कर रहे हो, तो उसमें से खाने में से आपकी बास आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? उस गंदे स्मेल को क्या बोलेंगे? रैंसिडिटी। एंड सेकेंड जो यहाँ पर मेरे को आपको बताने का था कि लाइमस्टोन कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और दूसरा बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? CO2. All right. Then now we have chapter number 4. Chapter number 4 is very easy, but इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपका जो क्वेश्चन है उसको जस्टिफाई करना है आपको अच्छे तरीके से। वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर और थर्मोमीटर। यस और नो? तो यहाँ पर आपको पता है, आंख बंद करके भी लिख सकते हैं क्या है? थर्मोमीटर। अगर इसका रीजन एक्सप्लेन करना बोले तो करना पड़ेगा। इट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर and others are the device to measure current in the circuit. Fuse wire, bad conductor, rubber gloves and generator. तो यहाँ पर आपको पता है fuse wire, bad conductor और rubber gloves ये सब क्या है? Ways to prevent current. Generator में आप generator से current आपको नहीं मार सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना? तो generator is the odd man out. Electric heater, electric iron, electric oven, solar panel. So here it is solar panel. Solar, electric, yes, this is green energy solar panel. Wood, I'm sorry, wood, cloth, plastic, natural stones. Exactly. यहाँ पर बताओ मुझे क्या आएगा आपका? Natural stones. Why natural stones have been kept here as odd man out?
एग्जैक्टली, नॉन इन्फ्लेमेबल। वुड में आग लग सकता है, कपड़े में आग लग सकती है, प्लास्टिक में आग लग सकती है, पत्थर में आग लग सकती है। क्या पत्थर से आग बन सकती है बट लग सकती? समझ में आया कि नहीं आया? पत्थर दिल है उसका। इन नॉन इन्फ्लेमेबल, दिल जलता नहीं है। दिल जले। द राइट हैंड थंब रूल, द राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3 ऑप्शन। ऑलराइट, आपको राइट हैंड थंब रूल का वो पता है ना, क्या है बताओ? थंब फिंगर काय के लिए है? यस, ABC, माँ, फादर, मदर एंड चाइल्ड। ये इस तरीके से याद किया आपने। द राइट हैंड थंब रूल में आपको पता रहना चाहिए द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट। यस और नो? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा वाला है इसमें? द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। ऑलराइट, बट राइट हैंड थंब रूल में आपको याद रखना है जो आपका उंगली है उसके हिसाब से। What are you doing? Alright, wait. Right hand thumb rule. Now we have Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule में आपको याद रखना चाहिए thumb में है motion of conductor. Shut up now. Index finger में we have direction of the magnetic field and middle finger आपका जो है वो है direction of the induced current. Understood or not? Was it easy? Yes. Stop laughing, girls. ये क्लियर हुआ फ्रंट पेज आपको? यस, बैक पेज भी है। ओहो, ट्रू और फॉल्स? इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, करेक्ट इट एंड रीराइट। हाउ कम यू कैन बी सो हैव मर्सी ऑन मी मैन? इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू I square R. Is it right? True. Yes, the above statement is true. I square R. Magnetic poles exist in pairs. True or false? It's sort of true. Yes or no? North and south. In India, the frequency of AC is 50 Hz. सही बात है, सही बात है, सही बात है, बहुत hard. Next, split rings are used in ABC generator and electric motor. In India, the periodic time of AC is 0.02222. ये मेरे को पता ही नहीं था, ये क्या है, नवा चीज आया ये। True. Yes or no? That's it. Until we meet for the very next time, make sure करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो चैंपियंस, वीडियो को लाइक करो, एंड एग्जाम में कोई भी अगर इसमें से आंसर आता है तो भर भर के दुआ देना मुझे, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। All right or not? Until we meet, all the best. Keep learning hard.